गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायाम् उत्तरभागे अथ सप्तमोऽध्यायः। उपमन्युरुवाच शक्तिस्वाभिभिः तस्य विद्यावीक्ष विलक्षणा एकानेकस्य रूपेण भाति भुवनो प्रभा अनन्ता शक्तयो यस्या इच्छा ज्ञान क्रियादया मायाध्याक्षा भवन्वर्हे विस्फुलिङ्गात् यथा तथा सदाशिवेक्षराध्या हि विद्याविद्वेषराधय अभवन् पुरुषाक्षास्या प्रकृतिक्षकरात्परा महदादिविशेषान्ता सत्त्वजाध्याक्षापि मूर्तय यच्चान्यदस्ति तत्सर्वं तस्य कार्यं न संशय सशक्ति सर्वगा सूक्ष्मा प्रबोधानन्दरूपिणी शक्तिमानुच्यते देवा शिवा शीतांशुभूषणा वेद्य शिवा विद्या प्रज्ञा चैव श्रुति स्मृति धृतिरेषा स्थिति निष्ठा ज्ञाने च कर्मशक्तया आज्ञा चैव परं ब्रह्मा देवविद्ये च परापरे शुद्धविद्या शुद्धकला सर्वं शक्तिकृतं यथा माया च प्रकृतिर्जीवो विकारो विकृतिस्तथा असच् सच् यति किञ्चत्या सर्वमिदं तत्तमा सा देवी मायया सर्वं ब्रह्माण्ड सचराचरं महो यत्य प्रयत्नेन मोचयत्यपि लीलया अन्यासः सर्वेषा सप्तविंश प्रकारया विश्वव्याप्य स्थितस्तस्मान्मुक्तिरत्र प्रवर्तते मुमुक्षु पुरा केचिन्मुन्यो ब्रह्मवादिना संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति यथा ततं किं कारणं कुतो जाता जीवाम केन वा वयं कुत्रस्माकं सम्प्रतिष्ठा केन वाधिष्ठिता वयं केन वर्तामहे शक्षत् सुखेश वन्येषु चानिशम् अवलिङ्ग्या च वश्यस्य व्यवस्था केन वा कृता कालस्य भावो निर्यातयदृच्छा नात्र युज्यते भूतानि योनि पुरुषो योगी चैषां परोऽथवा अचेतनत्वात्कालादेक्षितन्नत्वेऽपि चात्मना सुखदुःखानि भूतत्वादनीशत्वाचार्यते तद्ध्वान योगानुगता प्रपश्यच्चक्ति मैशिरं पाशविच्छ्वेदिकां साक्षान्निगूढां स्वगुणैर्भक्ष्यं तथा विच्छिन् पाशास्ते सर्वकारणं शक्तिमन्तं महादेवं पश्यन् दिव्यचक्षुषा यकारणान्यशेषानि कालत्तं सहित तानि च अप्रमेयो नया शक्त्या सकलं योधितिष्ठति तथा प्रसाद योगेन परमेन च दृष्टेन भक्तियोगेन दिव्यां गतिं वाप्नुयुः तस्मात् सः तथा शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये शिवं तेषां साक्षात्तकी शान्तिर्नेतरेषामिति श्रुति न हि शक्तिमता शक्त्या विप्रयोगोऽस्ति जातुचित् तस्मात् शक्ते शक्तिं तस्तदा तादामया निर्वर्तितहृदयो क्रमो विवक्षतो नूनं विमुक्तो ज्ञानकर्मणो प्रसादे सति सा मुक्तिर्यस्मात् करतले स्थिता दिवो वा दानवो वापि पशुर्वा विहगोऽपि वा कीटवाथ कृमिर्वापि मुच्यते तत्प्रसादता गर्भस्थो जायमानो वा बालो वा तरुणोऽपि वा वृद्धो वा म्रियमाणो वा स्वर्गस्थतो वाथ नारकी पतितो वापि धर्मात्मा पण्डितो मूढ एव वा प्रसादे तत्क्षणादेव मुच्यते नात्र संशया अयोग्याना च कारुणया दत्ताना परमेश्वरा प्रसीदति न संदेहो विग्रहा विविधान्मलान् प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो
भक्ति संभव अवस्था भेद मुत्प्रेक्ष्य विदास तत्र न मुह्यति प्रसाद पूर्विकायेयं भुक्ति मुक्ति विदायिनी नैव सा शक्यते प्राप्तुं नरेरेकेन जन्मना अनेक जन्म सिद्ध्वाना तस्मात् नुर्वृत्तिनां विरक्ताना प्रभूताना प्रसीदति महेश्वर प्रसन्ने सति देवेशे कशो तस्मिन् प्रवर्तते अस्ति नाथो ममेत्यल्पा भक्तिर्बुद्धिपुरासरा तप्सा विविधे शैवैर्धर्म संयुज्यते नरा तत्प्रयोगे तद्भ्यासस्ततो भक्ति परा भवेत् पर्या च तया भक्त्या प्रसादो लभ्यते परा प्रसादत्त सर्वपाशेभ्यो मुक्तस्य निर्वति अल्पभावोऽपि यो मर्त्य सोऽपि जन्मत्रयात्परा न योनियन्त्रपीडाय भवे नैवात्र संशया सांगनङ्गा नागाच या सेवा सा भक्तिरिति कथ्यते सा पुनर्विद्यते त्रेधा मनोवाक्याय साधने शिवरूपादिचिन्ताया सा सेवा मानसी स्मृता जपादिर्वाचिकी सेवा कर्म पूजादिकायकी संयम त्रिसाधना सेवा शिवधर्मक्ष कथ्यते स तु पंचविधा प्रोक्ता शिवेन परमात्मना तपा कर्म जपो ध्यानं ज्ञानं चेति समासता कर्मलिङ्गार्चनाध्यां च तक्षान्द्रयानादिकं जपस्त्रिधा शिवाभ्यासक्षितां ध्यानं शिवस्य तु शिवागमोक्तं यज्ज्ञानं तदत्र ज्ञानमुच्यते श्रीकण्ठेन शिवेनोक्तं शिवाय च शिवागमा शिवाक्षिताना करुणा च श्रेयसामेकसाधनं तस्मादिर्दयेदक्तिं शिवे परं कारणे त्यजे च विश्या संगश्रेयोऽर्थीमतिमानरा इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसहितायाम् उत्तरभागे शिवतत्त्वकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्याय श्रीकृष्णवाच भगवन्वच्छोत्रमिच्छामि शिवेन परिभाषितं वेदसारे शिवज्ञानं स्वाक्षितानां विमुक्तये अभक्तानां बुद्धिनां युक्तानामगोचरम् अथैर्दर्शार्धे संयुक्तगूढं प्राज्ञनिनन्दितं वर्णाक्षं कृतेर्धमर्विप्रवीतकचित्समं विधात षड्गादुद्धृत्य साङ्ख्याद्योगा च कृत्स्नश शतकोटिप्रमाणेन विस्तीर्ण ग्रन्थसङ्ख्यया कथितं परमेशेन तत्र पूजा कथं प्रभो कस्याधिकारपूजातो ज्ञानयोगादये कथं तत्सर्वं विस्तरादेव वक्तुमसि सुव्रत उपमन्युर्वाच शैवं संक्षेपे वेदोक्तं शिवेन परिभाषितं स्तुतिनिन्दादिरहितं सत्त्वप्रत्ययकारकं गुरुप्रसादजं दिव्यं नायासेन मुक्तिदं कथयिष्ये समासेन तस्य शक्यो न विस्तरा सिस्रक्षा पुरा व्यक्ता चिवसतानुर्महेश्वर सत्यकार्यकारणोपेत स्वयमाविर्भूत प्रभु जन्यमास च तदा ऋषिर्विक्षदिक् प्रभु देवानां प्रथमं देवं ब्राह्मणं ब्राह्मणसप्तमं ब्राह्मापि पितरं देवं जायमानं न्यश्वैक्षत त्वं जायमानं जनको देव प्रापश्य दागया दृष्टरुद्रेण देवो सावस्र सृजदीक्षमीक्षर वर्णक्षं व्यय वस्थां च चकार स पृथक् पृथक् सोमं ससर्ज यज्ञार्थे सोमाद्य च समजायत धरा च रवि सूर्यक्ष यज्ञविष्णु शचीपति चान्य च सुरारुद्रं रुद्राध्यायेन तुष्टुः प्रसन्वदन्नस्तस्थो देवानामग्रत प्रभु अपहृत्य
स्वलीलार्थं तेषां ज्ञानं महेश्वर तं पृच्छन् सस्ततो देव को भवानिति मोहिता सोऽब्रवीद गवानोद्रोहाहमेक पुरातन असम्प्रथमेवाहं वर्तामि च सुरोत्तम भविष्यामि च मतो अन्यो व्यतिरिक्तो न कश्चन अहमेव जगत्सर्वं तर्पयामि स्वतेजसा मतोऽधिकसमो नास्ति मायो वेद समुच्यते इत्युक्त्वा भगवानुद्रस्तत्रैवान्तर्गतः स अप्यश्यन्तस्तमीशानं स्तुवन्तशैवसामभिव्रतं पाशुपतं कृत्वा त्वत्थर्वशिरसि स्थितं भस्मसञ्चन् सर्वाङ्गा बहुपुरमरास्तदा अथ तेषां प्रसादार्थं पशूना पतिरीश्वरा सग्नाक्षो मया सार्धं सा निनित्यं करोत्प्रभु यं विनिद्राजिक्षासा योगिनो दग्धकिल्यवशा हृदि पश्यन्ति तं देवं ददृशदेवपुङ्गवा यामाहुः परमाशक्तिमीक्षरे च नो वर्तिनीं तामपश्यन् महेशस्य वामतो वामलोचनां ये विनिर्धूत संसारा प्राप्तशैवं परं पदं नित्यसिद्धाक्ष ये वान्यं ते च दृष्टगणेश्वर अत्थतं तुष्टुर्वृद्देवा देव्या स महेश्वरं स्तोत्रे माहेश्वरे दिव्ये श्रौते पौराणिकैरपि दिवोऽपि देवानालोक्य गृह्णया वृषभध्वज तुष्टस्मितया सुप्रीता स्वभावं धुरां गिरम् अथ सुप्रीतमनसं प्रणिपत्य वृषध्वजम् अर्थमहतं देवा प्रपच्छुरिदमादरा दिवाऊचु भगवन् केन मार्गेण पूजनीयोऽसि भूतले कस्याधिकारपूजायां वक्तुमर्हसि तत्त्वता तथा सस्मितमालोक्य देवीं देवो वरोहर स्वरूपं दर्शयामास घोरं सूर्यात्मकं परं सर्वक्षर्यगुणोपेतं सर्वतेजोमयं परं शक्तिर्भिक्षाङ्गैर्ग्रहदेवैक्षसंवृतम् अष्टबाहुं चतुर्वक्त्रं दर्नारिकं दुतं दृष्टिर्दैवं दुताकारं देवविष्णुपुरोगमा बुद्धध्वा दिवाकरं देवं देवी चैव निशाकरं पञ्चभूतानि शेषानि तन्मयं च चराचरम् एवमुक्त्वा नमः शुक्रस्तस्मै चार्कप्रदाय वै सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णवर्णाभिर्भरणाय तुभ्यं पद्याभनेत्राय सपकञ्जाय ब्रह्मोन्द्र नारायणकारणाय सुरत्नपूर्णं ससुवर्णतोयं सकुडकुडमाध्यं सुकुशं सपुष्पं प्रदत्मादाय सहेमपात्रं प्रशस्तमर्ध्यं भगवन् प्रसीद नमः शिवाय शान्ताय सघ्नयादिहिते हेतवे रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्राह्मणे सूर्यमूर्तये या शिवं मण्डले सौरे सम्पूज्यैव समाहिता प्रातमध्यात्स सायाहे प्रध्यादर्दमुत्तमं प्रन्मेदा पठेदेथाञ्च लोकाञ्चुक्तिमुखानिमान् न तस्य दुर्लभं किञ्चित् दत्तशेन मुच्यते दृढं तस्मादभ्यर्च ये नित्यं शिवमादित्य रूपिणं धर्मकामार्थमुक्त्यर्थं मनसा कर्मणा गिरा अथ देवान् समालोक्य मण्डलोस्थ महेश्वरा स्वार्गमोत्तर दत्त्वा शास्त्रमन्तर्धादर तत्र पूजाधिकारोऽयं ब्रह्मक्षत्रविशामिति ज्ञात्वा प्रणम्य देवेशं देवा जग्मुर्यथागमं तम् अथ कालेन महता तस्मिन् शास्त्रे तिरोहिते भर्तारं परिपच्छ
तदकस्था महेश्वरी तया सचोदितो देवा देव्या चन्द्रविभूषणा अब्दत्कर्मुद्धृत्य शास्त्रं सर्ववागमोत्तरं प्रवर्तितं च तल्लोके नियोगात् परमेष्ठिना मया गत्स्तेन गुरुणा दधीचेन महर्षिणा स्वयं पयवतीर्योऽव्ययुगावर्तेषु शूद्रिक स्वाक्षतानाविमुक्त्यर्थ कुरुते ज्ञानसंततं त्रिभूतसत्यो भार्गवक्षहाङ्गिरा सविता द्विजा मृत्युशतक्रतुर्धीमान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवा सारस्वत स्त्रीधामा च त्रिवृत्तो मुनिपुङ्गवा शतेजा स्वयं धर्मो नारायणिति श्रुता स्वरक्षारूणि धीर्मास्तंथा चैव कृतञ्जये मामतेयो भरद्वाजो गौतम कविरुत्तम वाच सर्वा मुनि साक्षात् तथा सूक्ष्मायनी शुचि त्रिन्बिन्दुर्मुनि कृष्णा शक्तिशो शाक्तेय उत्तरा चतुकर्ण्यो हरि साक्षात् कृष्णद्वैपायनो मुनि व्यासावतारान् शृण्वन्तु कल्पयोगेक्षरान् क्रमात् लैङ्गिर्व्यासावतारा हि द्वापरान्तेषु सुव्रता योगाचार्यावताराक्ष तथा शिष्येषु शूलिना तत्र तत्र विभो शिष्या चत्वारसूयर्मोजसा शिशायस्तेषां प्रशिष्याक्ष शतशोथ सहस्रश दिशा संभावना लोके शैवाज्ञाकरणादिभिः भाग्यवन्तो विमुच्यन्ते भक्त्या चात्यन्तभाविता इति श्री शिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायाम् उत्तरभागे शिवतत्त्वज्ञाने व्यासात् अवतारवर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः। अथो नमोऽध्यायः। श्रीकृष्णोवाच युगावर्तेषु सर्वेषु योगाचार्यच्छलेन तु अवताराणि सर्वस्य शिष्याक्षं भगवन् वद। उपमन्युरुवाच श्वेतासुतारो मदनासुहोत्रकङ्क एव च लोगाक्षिक्षक महामायो जैष्कीश्वस्थैव च दधिवाहक्षशस्पो मुनिरुग्रो त्रिरेव च सुपालको गौतमस्तथा वेदशिरामुनि गोकर्णक्ष गुहावासी शिखण्डी चापरास्मृता जटामाली चाटहासो दारुकोलाङ्कुली तथा महाकालक्ष शूली च दण्डिमुण्डीश एव च सविष्णु सोम शर्मा च लकुलीश्वर एव च तथैवाराहकल्पे सिमन् सप्तमस्यान्तरे मनो अष्टाविंशतिसङ्ख्याता योगाचार्य युक्रमत शिष्या प्रत्यये नेतेषां चत्वार शान्तचेतसा श्रितादयक्ष ऋष्यान्तास्तान् ब्रवीमि यथाक्रमं श्वेत शिक्षैव श्वेतशव श्वेतलोहिता दुन्दुभि शत्रुपक्ष ऋषिचीक केतुमास्तथा विकोशक्ष विकेशक्ष विपाशा पाशनाशना सुमुखो दुर्मुखो क्षैव दुर्गमो दुर्तिक्रम सनत्कुमार सनकासनन्दक्ष सनातना सुधामा वीरा जाक्षैव शङ्खशाण्डक्ष एव च सारस्वतक्ष मेघक्ष मेघवाह सुवाहक कपिलक्षासुरी पंशिको भाषकल एव च पराशरक्ष गर्गक्ष भार्गवक्ष गिरास्तथा बलबन्धुर्निरामित्र केतुरिङ्गस्त बोधना बोधरक्ष लम्बक्ष लम्बात्मा लम्बे केशका सर्वज्ञ सम्बुद्धिक्ष साध्य यसीदस्तथैव च सुधामा कश्यप्यश्चैव वसिष्ठो विरजास्तथा अत्रिरुग्रो गुरुश्रेष्ठ श्रवणोत श्रविष्ठक कुनिक्ष कुनिबाहुक्ष कुशरीर कुनेत्रका काश्यपो शान्ना शैवच्यवनक्ष बृहस्पति उत्तथो वामदेवक्ष महाकालो महानिला वाच च वासुवीरक्ष शिवाकक्ष यतीश्वरा हिरण्यनाभ कौशल्यो लोकाक्षी
निस्तथा सुमन्तुच्चैर्मिनिश्चैव कुबन्धकुष्कान्धरा फलक्षोदर्भयान्यनीश्चैव केतुमान् गौतमस्तथा भल्लवी मधुपिङ्गक्ष श्वेतकेतुस्तथैव च उशीचो बृहदक्षक्ष देवलकविरेव च शालिहोत्र सुवेक्षक्ष युम्नाक्ष शरदसु छग्लकुण्डकर्णक्ष कुम्भशैव प्रभाहुक उल्लको विद्युक्षैव शम्भुक्षा शबलायन अक्षपादकर्णादक्ष अलूको वत्स एव च कुलिक्ष चैव गर्गक्ष मित्रकोरुष एव च ते शिष्या महेशस्य योगाचार्यस्वरूपिणः संख्या च शतमेतेषां सह द्वादश संख्यया सर्वे पाशुपतास्यध्वा भस्म तद्गुलितविग्रह सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञा वेदांकारका शिवाक्षमर्ता सर्वे शिवज्ञानपरायणा सर्वसंगविनिर्मुक्ता शिवैकासक्तचेतसा सर्वद्वन्द्वसहाधीरा सर्वभूतहिते रता ऋचवो मृद्वस्वस्था जित्क्रोधा जितेन्द्रिया रुद्रक्षमला भरना स्त्रीपुण्डाटिकतमस्तका शिखाजटा सर्वजटा जटामुण्डशीर्षका फलमूलाशनप्राया प्राणायामपरायणा शिवभिमानसम्पन्ना शिवध्याने तत्परा समुत्थित संसार विश्वेक्षाण्ड पुरोदमा प्रयातु मेव सन्नद्वा परं शिवपुरं प्रति सदेशिकानि मान्मत्वा नित्यं य शिवमर्चयेत् स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्या विचारणा इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे योगावतार वर्णनामो नवमोऽध्यायः।